Hello guys, welcome to the JavaScript tutorial. Now we'll discuss about hoisting exercises. First example, var name Rohit, then var print name function, okay, console.log name, एक different नाम देते हैं, ठीक. Then again var name 1 equals to Sachin, ठीक है. Then console.log name 1. अब हम प्रिंट नेम को कॉल कर रहे हैं. तो आप बताओ थोड़ा सोच के इसका आउटपुट क्या होगा एंड इसका आउटपुट क्या होगा. ओके, सो if JavaScript do hosting, then what will happen? JavaScript do hosting means मैं होस्टिंग का थोड़ा सा साइड बाय साइड थोड़ा सा करता हूँ, ठीक है. यस, तो इसकी जगह में क्या हो जाएगा, इसकी जगह में हो जाएगा var name 1, राइट. देन name 1 equals to रोहित, ठीक. ये हो गया. अब ड्यूरिंग द क्रिएशन फेज only the print name will be stored in the memory. उसके बाद क्या होता है, जब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेज वी आर कॉलिंग द प्रिंट नेम फंक्शन, ठीक है. जब फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे देन इट क्रिएट्स फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जब हम लोग कॉल करेंगे तो ये फिर से इट हैज़ द टू फेजेस अगेन, like the creation phase and the execution phase, ठीक है. पहले क्या होगा, पहले तो जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट हम देखे उसमें हम लोग दो फेजेस में चेक कर ले, राइट. अब जब हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं देन वी आर सीइंग टू फेजेस. ड्यूरिंग द क्रिएशन फेज अगेन var name 1, okay, then we are trying to console it name 1, then we are assigning name 1 equals to Sachin, ठीक. then we are again console log name 1. अब देख लो भैया इसमें क्या क्या है. नेम 1 है उसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं तो अनडिफाइंड तो आएगा, राइट. क्योंकि ड्यूरिंग द क्रिएशन फेज it has been stored in the memory and undefined has assigned to that name 1, right. Now I am trying to access name 1, so it will give undefined definitely. Then we are doing initialization with Sachin to name 1. उसके बाद हम लोग name 1 को एक्सेस कर रहे हैं तब इसमें आएगा सचिन जब प्रिंट करेंगे, राइट. और इसमें क्या आ जाएगा अनडिफाइंड, करेक्ट. जब हम लोग इसको होस्टिंग की तरफ से देखेंगे तब ऐसे आएगा. चलो इसको चेक करते हैं. नोट टेस्ट डॉट जेएस, देखो एक आ गया अनडिफाइंड. अनडिफाइंड की वजह समझ में आया, राइट. सो जब हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं, राइट, कॉल करने के बाद क्या होगा, इट विल क्रिएट अगेन द फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेस्ट. तो फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेस्ट के अंदर फिर से ऐसे ही क्रिएट होगा. मतलब बाहर में जो वेर नेम 1 हो गया ना, यही पे इसका कोई वैल्यू नहीं है. अभी जो हम लोग रोहित हिसाब से उसको स्टोर किए थे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ checking this one because in here again it will create the name 1 variable and for this execution context it will store the value in the memory again. चलो ये एग्जांपल हो गया. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. where I
no, console.log, then I, then is a for loop, I less than 10, I plus plus, then console.log, then so बेसिकली क्या हुआ, इसमें मैंने बाहर में फिर से मैं इसको एक्सेस करने लगा डॉट log, then I. Tell me what will give the result of this console log I and this console log I. So first one it will give not let here, give var. What is the, yeah. So we know the var is a function scope, right? Yeah. So if I'll declare var, then if I'll trying to access with I, then what will happen here? So in here it will give me undefined, and it will give 10 because less than 10 means 9, then 10. Yeah, it will give 10, and first one it will give undefined, and leave this part. If you leave this part, then you can see it. Yeah, undefined and 10. Why it's happening? Because when we have declared this var I phase, during the creation phase क्या हो रहा है? Var I. Okay, then console log I, देन उसके बाद यहीं पे इनिशियलाइज हो रहा है ना भाई, उसके बाद यहीं पे उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं आई इक्वल्स टू 0, देन आई लेस देन 10, देन आई प्लस प्लस, देन इसके बाद जो भी हम लोग कर रहे हैं, देन आई एम ट्राइंग टू एक्सेस अगेन console डॉट लॉग आई। तो आई का जितना भी इंक्रीमेंट हुआ ना, 1 + 2 + ऐसे करते करते जब 9 में आया, देन 10 अगेन हुआ, देन इट्स चेक द कंडीशन इट्स नॉट गो इनसाइड, सो इट विल कम हियर। तो उसके पहले आई तो अनडिफाइंड आएगा ना, बिकॉज ड्यूरिंग द क्रिएशन फेज वी जस्ट क्रिएटेड द वेरिएबल आई एंड वी आर स्टोरिंग द इन द मेमोरी। तो मेमोरी में हम लोग अनडिफाइंड स्टोर किए टू आई, तो इसलिए अनडिफाइंड दे रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें तो ऑलरेडी आई का जितना वैल्यू आएगा उतना ही दिखाएगा ना, सो दैट इज करेक्ट, राइट? गॉट इट? So this is happening during the hoisting. Okay. So during the creation phase only, you'll just create this function reference to the heap memory, and the var1 variable will be stored to the heap memory. Initialization will happen during the execution phase. Execution time में जब हम लोग function को भी call करेंगे, then it will create the another execution phase, function execution phase. In there what will happen, I'm trying to access the var1, ठीक है, then I'm trying to access the late one, which is defined inside the block. So we know the late is basically block scope variable, we can access outside of the block. Creation phase, it will not find any reference of this, then it will say okay this is not defined, but मैंने a पे ऐसे लिखता like let 1 equals to 10, तब मुझे दूसरा आ रहा था like okay the initialization is not happened, but the this is defined means during the creation phase JavaScript engine will just create memory for this. But when I declare this let with the late one, so it means block scope. So during the creation phase, the JavaScript engine don't find any reference of this. That's why it will throw error. For the var one क्या होगा? var one देखेगा अच्छा इसका अंदर है मतलब हो जाएगा var one ऐसे। तो var one को हम लोग ऐसे इसको एक्सेस करेंगे, then it will give undefined here, right? And उसके बाद जब var during the execution phase we are storing 2 into the var1, and we are trying to access outside of the scope on this block scope, because we know the var is a function scope variable, and then this var will give 2 to this var1, then it will give 2 only. Okay, but if I'll try to run this program, then it will throw error itself, because we are trying to access the late one and late outside of the block scope. You can see the error also. See, the late one is not defined, right? So I'm just
comment it out, then you can check the result again. So it's giving undefined too. I think we just done three examples and we just got to know how the hoisting is work. I think it's very clear to everybody. If it's not clear, please let me. Thank you guys for watching the video. We'll meet in the next session.